Okay. Continuing with this paper, uh, line L is provided and the question is asking us to find the gradient of line L. Obviously, the easiest way is to just read from the graph. Take 2 points, for example, this and this. So you go from one point to the other, and what is the change in y? 1. And what is the change in x? 2. So that is just 1 upon 2. Another way to do is कि आप actual coordinates ले लें 0, 1, 0, 1, and another coordinate 2, and find the gradient y2 minus y1 upon x2 minus x1. एक ये point है 0, 1, ये दूसरा point है 2, 2. You can take any other point as well. सही है? So this is your gradient of the line. Okay, class. Now the question is telling us that the shaded region in the diagram is defined by 3 inequalities. One of these is x plus y is less than or equal to 4. First, tell me the equation. Which equation is x plus y is equal to 4? Very good. 4 वाली जो cut हो रही है, this equation is x plus y. So this equation is already taken care of. First, make equations, then go for inequalities. What is the other line? The other line is a line L. Can you find the equation of line L? Equation बताओ पहले इसकी. First, tell me the equation of this line. You know the gradient is half. And what is the y-intercept for this one? Y-intercept क्या है line L का? 1. So y equals to mx plus c अगर मैं use कर रहा हूँ, gradient is half x plus 1. This is the equation of the line. Now the shaded region, is it above this line or below this line? Above. तो above पे y is greater, y बड़ा होता है, y is greater than or equal to half x plus 1. Okay, take 2 coordinates on the line. एक ये वाला point ले लिया. हाँ, but clear पता होना चाहिए कि ये coordinate है exact. ठीक है? You could have taken this as well. 4, 3 भी ले सकते थे. Right? Okay, what is the other line? ये 2 lines तो. We can either plug in a point and find C, or we can directly see, look at C from the graph. C is the y-intercept. C क्या है इस graph? Y-axis कहाँ से cut कर रही है line? 1 से. What about the third line? What is the third line? ये वाली line, x is equals to 1. Now, if I go to the shaded region, वहाँ पे x, is it greater than 1 or is it less than 1? Greater than 1. So x is greater than or equal to 1. This is the third region, third inequality. लिख के करो बच्चों प्लीज. इफ यू आर नॉट राइटिंग इट डाउन, बहुत मसला होगा तुम्हें. Okay, class. Dwayne buys a camera for $90. He sells the camera for. Calculate his percentage profit. What is his profit? पहले तो मुझे profit बताओ. लिख कर करो. What is the profit? What is the profit? $36. How did you find profit? 126 minus 90. So profit is $36. Then we need to find percentage profit, which is basically profit divided by original value. What is the original value? 90 times 100. Simplify it. 9 से हो जाएगा. 9 4s are and 10s are 4 upon 10 into 100. 0 0 cancel हुआ तो 40%. Now in part B, the price of a computer was $375. In a sale, the price was reduced by $15. So if the price is reduced by $15, calculate the reduction in the price of the computer. So reduction is 15% of 375. So 15% of 375. Simplify this.
5 से भी कर सकते हो इन दोनों को, और you can just multiply 15 and 375 and then move two decimal places. What do you get? Give it a try. Try to do it on your own. फाइव से कर सकते हो कैंसिल, 5 3s are 5 20s are, फिर 5 से कर लो 5 4s are, or you can just multiply 15 and 375. What do you get when you multiply 15 and 375? ये बता दो मुझे. 15 into 375 is, just take 15. हाँ नहीं, 15 और 375 को मल्टीप्लाई करो, that's it. The question is asking you the reduction. It is not asking you the price or the reduction in the price. It is not asking you the sale price. That is for sale price. If the question would have asked you sale price, you would have said agar 15% is the reduction, so 85% is the sale price. Question पूछा कम कितने हुए पैसे? What is the reduction? 15% is the reduction. So 375 into 15 is what? 5 6. So 5 6 2 5. I'm trusting you with the value. When you divide by 156 point, multiply करो 15 into 375 कितना आया? उसको divide by 100 करो. Very good. This is your reduction. इतनी price कम हो गई है. If the question would have asked you the sale price, फिर आप directly 5% से कर सकते थे. So please read the question, what the question is asking, and then apply whatever method you want to. The exchange rate between euros and dollars is this. So 180 को करना है, 180 euros है. एक मेथड है जो मैं बताता हूँ, मल्टीप्लाई एंड फ्रैक्शन का साइन, यूरो नीचे लिखा, ऊपर डॉलर लिखा. $1 is, sorry, $1.25 is €1. So eventually you'll have to take 180 and multiply it by 1.25. Tell me how many dollars do you get? Next is 500 euros have to be converted into $225. The next one is $500 and this has to be converted into euros. So obviously you divide it by 1.25. Decimal में कैसे करते हैं? I just told you people. Now cancel it with 5 and tell me what do you get. एक एक करके 5 से cancel करो. 5 1s are, 5 2s are, 5 4s are. So you get 400. The next part is regarding transformations. Please let me know if you're having trouble with any of the rough working or calculations. I'll help you out with that as well, and you must know it. Paper 1 में कोई help और aid नहीं होगी टीचर की, so you must know how to. 5 से पहले कैंसिल करो ना, इस पे 25 हो गया, 5 1s are 5 हो गया, फिर 5 से कैंसिल करो, नीचे 5 बचा और ऊपर ये 5 2s are 10 हो गया. Is that right? फिर दोबारा 5 से कैंसिल करो, 5 4s are 20 हो गया, and you have 400.
triangle A can be mapped onto triangle B by a translation. एक तो आप देखकर भी बता सकते हैं. Take any one point, किसी भी एक पॉइंट को लो. For example, if I am taking this point, ये वाला पॉइंट यहाँ चला गया. So what is the movement in X and what is the movement in Y? प्लस माइनस के बारे में बहुत केयरफुली बताना. I could have taken this point as well. I could have taken this point as well. एक ही बात हो. X is +3 and Y में 1. Y is 1 and X is +3. So if you have the grid, you can directly tell your answer from the grid. The column vector for translation is 3 and 1. Enlargement में होता है. RFC part में आएगा, don't worry. Okay. Find the matrix representing the transformation that maps triangle A onto triangle C. First, tell me what transformation is this? Reflection in what? Very good. Reflection in y-axis. The reflection in the line x is equals to 0. So reflection in y-axis, you can figure out the transformation matrix. It is a 4x4, 2x2 matrix. You do not know the matrix, right? कोई भी पॉइंट लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक दिस पॉइंट 3 1 वाला पॉइंट था. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ट्राई टू मेमोराइज इट. आई डू नॉट एनकरेज दैट. ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स. व्हाट एम आई डूइंग? 3 1 वाला पॉइंट है एंड उसका इमेज कहाँ हो गया? -3 एंड 1 पे. सही है? नहीं, और से देखो -3 और 1 पे क्या है ना इसका में. नाउ लेट्स ट्राई टू फिगर आउट द मैट्रिक्स. एक एक रो करके फिगर आउट करो. कैन यू फिगर आउट द फर्स्ट रो? फर्स्ट रो क्या होनी चाहिए सो दैट द आंसर बिकम्स -3. आई वांट अ -1 ओवर हियर एंड आई वांट अ 0 ओवर हियर. देखो -1 और 0 अगर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई करूंगा तो द आंसर विल बिकम -3. सही है? व्हाट डू आई नीड इन द सेकंड रो सो दैट द आंसर इज 1 0 और बस. this is your matrix. So you can figure out the matrix right then and there. You do not need to memorize it. हाँ तो किए होते हैं बहुत सारे सवाल पास भी करते हैं. बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे. Students tend to memorize these matrices. You do not need to do that. You can figure out the matrix on your own as well. ये एक point था. I just took one point as an example. 3 1 was the object and उसका image -3 और 1 पे आ गया. So matrix multiplied by object is equal to image. I do not know the matrix. That is a 2x2 matrix. So object और image को देखते मैंने matrix figure out किया कि matrix होगा क्या. कोई बात नहीं. आप पहले एक रो figure out की ना. What do I need in the first row? खाली लिखो 2x2 matrix, फिर figure out करो first row में ऐसा क्या हो so that when I multiply ये 3 1 जाके -3 हो जाए. 3 को I want to multiply by a -1. 1 को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना चाह रहा हूं. पहले उसमें तो नहीं, तो -1 और 0 हो गया. क्लियर है? व्हाट अबाउट द सेकंड रो? 0 और फिर 1. दिस इज मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन. इसकी बहुत डिटेल्ड वीडियो मैंने डाली है, उसको समझ लोगे. उसमें सारे मैट्रिक्स समझाए मैंने. The next is इसमें देख लो बेटा. enlargement है. scale factor 2 and center is 5 0. How do we enlarge? Step by step देखना. Which triangle do we need to enlarge? A. 5 0 is your center. So the first thing that you do is you mark your center. 5 0 is your center. 5 and 0. This is my center. उसके बाद सबसे पहला काम क्या करते हैं हम? We try to enlarge every point individually. यहां से लाइन बनाएं through A. Scale factor 2 means whatever your distance of the object is from the center, उसका double होगा image का distance from the center. Now there are two ways of measuring this distance. होते तो 3 है, scale से भी कर सकते हैं, but 2 ways which are commonly used. One is using a compass and the second is using boxes. कैसे? boxes कैसे use करते हैं? If I go from the center to this point, remember this is the object. बॉक्सेस काउंट करो. एक्स और वाई में कितने बॉक्सेस हैं? वेक्टर की तरह -3 एंड 1.
डिस्टेंस को बॉक्सेस में तोड़ के काउंट कर दिया, -3। नहीं, इस स्केल फैक्टर 2 का मतलब है कि जितना भी डिस्टेंस इस पॉइंट का है फ्रॉम द सेंटर, इमेज का डिस्टेंस उसका डबल होगा फ्रॉम द सेंटर। सही है? So I can break the distance into boxes as well. -3 in x and 1 is y. इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, -3 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 करो, -6 and 2, but -6 and 2 from the center से -6 and 2, you end up getting your image over here. ये पहला पॉइंट है जिसका इमेज आपका यहां पर आ गया। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, इसका इमेज यहां पर आ गया। नाउ डू द सेम विथ अनदर पॉइंट, बिल्कुल इसी तरह करें। लाइन फ्रॉम द सेंटर थ्रू द ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड। सही है? व्हाट इज द डिस्टेंस सेंटर से लेकर ऑब्जेक्ट तक का? -2 and 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, -4 and 1, -4 and 1, यहां पे इसका बिल्कुल मल्टीप्लाई बाय 2, 2 -4 and 2, यहां इसका इमेज आ गया। व्हाट अबाउट द थर्ड वन? लाइन फ्रॉम द सेंटर थ्रू द ऑब्जेक्ट, so -2 and 3 multiplied by 2, so once you get that, you can draw your triangle. This will be your clear है बच्चों? This is for transformation. Okay, now I want everyone to write down the working for the next questions that we will do. Find the size of the interior angle of a regular octagon. How do you people approach this question? Pehle give it a try and then I'll let you know. Always go for the approach of exterior angles. If you can find an exterior angle which is 360 upon n, with n being the number of sides. Agar 8 sides hai, to can you tell me the exterior angle? What will be the exterior angle? लिख के करो, do not just calculate these things. Exterior angle is 45. Once you know the exterior angle, you know an interior angle plus exterior angle is always equal to 180. So interior angle is equals to 180 minus 45. A regular octagon, an equilateral triangle, and a regular n-sided polygon fit together at a point. Regular octagon का interior angle we just found out that is 135. This is an equilateral triangle. इसका angle 60 होता है, and we do not know A. So how do we find the value of A first? If I add all of them, what should that be equal to? Yes, बेटे, इन सबका सम इक्वल टू 360 होगा। A plus A is 360 minus 195
165. So if interior angle is 165, what is the exterior angle? 180 से माइनस करो ना. 360 upon n होता है ना. So I know the exterior angle and I want to find n. n उधर जाकर मल्टीप्लाई होता है. बिल्कुल, A is an interior angle of a regular point. So what is the value of n? Twenty. The next question says evaluate the cube root of 216. How do we evaluate the cube root of 216? हम 216 की पहले prime factorization करते हैं. Very good. Tell me what do you get when you do the prime factorization of 216? 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3. Obviously, you can write it as 2 cube and 3 cube as well. 2 भी बाहर आ गया, 3 भी बाहर आ गया, so we get 6. नहीं है 2 3 दफा होगा. पहले 2 से डिवाइड किया, what are you left with? 108. फिर दोबारा 2 से किया, left with 54. तो 16 को 2 से किया तो 1. नहीं, 2 1s are 2, 2 zeros are, तो 1 के बाद एक और 6 अगर आप नीचे लेंगे तो 0 लिखेंगे पहले. खुद विजुअलाइज करो बेटे. इफ इट इज 216 and I divided by 2, 18 बचेगा क्या? 108 बचेगा. लॉजिकली सोचो. 216, 216. लॉजिकली सोचो ना. 216. देखो, लेट आई शो यू द रफ वर्किंग. यस बच्चों, वन वे टू डू इट इज के 2 की पावर, इसको प्राइम बेसिस में लिख लो, 4 और हाफ हो गई, माइनस एनीथिंग टू द पावर 0 इज, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1. तो ये हो गया 2 स्क्वायर माइनस 1 विच इज 4 माइनस 1. डायरेक्टली भी कर सकते थे आप, इफ यू नो के रूट है 16 का रूट इज 4, 4 माइनस 1 इज 3. The next part asks us to simplify this. पहले जो ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफिकेशन हो रही है, काइंडली डू दैट. टी ऊपर कैंसिल हो गया, ऊपर एक ए बचा, नीचे 4 b square. This is b cube, sorry, and the power is -2. Is that right? ऊपर प्लस माइनस तो नहीं हो रहा ना. इफ यू हैव एडिशन और सब्ट्रैक्शन, फिर वी कैन नॉट कैंसिल आउट. बिल्कुल कर सकते हैं हम. क्या हुआ? 3 1s are 3, 3 4s are 12. फिर ऊपर के 2 ए थे, नीचे एक ए था, तो कैंसिल करो. ऊपर एक ए बच जाएगा, ऊपर एक बी है, बी पावर 4 में, नीचे 4 बी है, बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी. कैंसिल करो, नीचे 3 बी बच गए ना, बी क्यूब. अब इनकी पावर अगर -2 है मेरे पास, तो आई कैन राइट इट एज ए की पावर -2 अपॉन 4 बी क्यूब की पावर -2. इसको ऊपर ले जाता हूँ, 4 बी क्यूब का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर. बचा ना एक है, हमने कब कहा नहीं एक है ऊपर. खत्म. ऊपर नीचे ना, नीचे एक ही था ना. इज दिस क्लियर?
The next is about kinematics. Find in terms of V the acceleration of the car in the first 50 seconds. What graph is this? This is a speed time graph. Speed time graphs, how do we find the acceleration? It is the gradient of a speed time graph. Likh lo. The gradient of a speed time graph is acceleration. And all of your science students, mashallah. Gradient कैसे निकलेगा उसके लिए coordinates ले लेते हैं हम. Take 2 points. एक है 0, v and the other is 50, 3v. So gradient is acceleration y2 minus y1 upon x2 minus x. 2v upon 50, v upon 25. This is your acceleration in the first 50 seconds. We took these 2 points. This coordinates 0, v, 50, 3. लिख के करो. You look at the board and you believe you'll be able to do it in the exam. Trust me, you won't. The car travels 2,500 meters during the 100 seconds. Find V. Okay, how do we find the distance traveled from a speed time graph? Distance through a speed time graph can be found by finding the area under the graph. So area under the graph of a speed time graph is your distance traveled. Area under a speed time graph is your distance traveled. Now you can split this distance into 2 shapes. एक तो ये rectangle है area, simple. सही है. And another area is your trapezium. बताता हूँ हाइट क्या होगी, डोंट वरी. Okay, this green one is your trapezium and the purple one is your rectangle. If you add both these areas, that will give you a total distance. पहले तो rectangle की बात करते हैं. What are the dimensions of this rectangle? 50. Width is 50. 100 में से 50 क्या, तो ये कितना हो गया 50. And height is 3v. Right? तो पहले लिखते हैं total distance हम लिख रहे हैं. Area total है 2,500. 50 into 3v plus now area of trapezium, right? इसका यूनिट ही मीटर्स होता है, डिस्टेंस आता है ना. सो एरिया टोटल हमें पता है 2,500 है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 50 into 3v plus now what about area of trapezium? और से देखो, this is your trapezium. What are the 2 parallel sides of this trapezium? Vertical lines are the parallel sides and this is your height. ये आपकी height of the trapezium है. So what is the height of the trapezium? The height is the perpendicular distance between the parallel sides. So what is the height of the trapezium? What is this? This is 50. One parallel side is V and the other parallel side is 3V. So area of trapezium is half into height, which is 50, into sum of parallel side, which is V plus 3. So 2,500 is 150V plus 25 into 4 is 100V. 2,500 is equals to 250V. 2,500 over 250. So V is 10. Find the speed of the car in kilometers per hour when t is 75. 75 पे स्पीड कितनी थी? 3v थी मीटर्स पर सेकंड में.
So speed was 3v meters per second. 3 into v किया हमने 10. Speed is 30 meters per second. Now I want to convert meters into kilometers. Meters नीचे, kilometers ऊपर. 1 kilometer is 1000 meters. And again multiply seconds ऊपर, नीचे hours. 1 hour is 3600 seconds. So what will you do? 30 into 3600 divided by 1000. Zero सारे नीचे के cancel हो गए, ऊपर के भी, तो you are left with 3 into 36, which is 3 into 36 is 3 into 36 is 108. Okay, the next question is about probability. I want all of you to draw this probability tree on your own. Lewis has 3 black pens and 7 red pens in a case. He takes 2 pens from the case at random without replacement. Complete the tree diagram to show the possible outcomes of their probabilities. So if he takes the black one out, if that means that there is one less in the black one, so that is 2 over 9 for black. What about this red one? 7 over 9. What about this red one? 7 over 10. If the first one is red, then the second red is 6 over 9, and the black is 3 over 9. If the first one is red, then the black remains the same. Make this tree on your own. Yes, class. Probability of 2 black. First is black and the second is also black. Yes. एक path में जितनी probabilities हो, we multiply, और and पे we multiply. Cancel them. 3 ones are 3. 3 threes are 9. 2 ones are 2 and 5. So 1 upon 15. Two different colored pens. So what path do I have for two different colored pens? Black and red, or red and, so the first is black and the second is red, or the first is red and the second is black. So that is 42 upon 90. Simplify. करो 2 से करो, इसको ऐसे कर लो. 21 हो. क्या है बेटे? हम्म, 30. 7 over 15.
3/15, 3/15. 3 sevens are होता है, you're cancelling with 3, not with 7. Find the length of AG. नहीं, this is 12, तो BE is 12. I do not know AG. AG जो है ये भी स्क्वायर है, so AE की भी वही लेंथ होगी. I will apply the Pythagoras theorem. Perpendicular is, hypotenuse is 15, and this is AG. 15 का square is, what do you get? Simplify. The question says that these two are squares. So if this is 12, BE will also be, if this is AG, I do not know what AG is, ये भी AG के बराबर होगा. I applied a Pythagoras theorem on this right angle triangle. G 81. 81 is AG ka square. So AG is 9 centimeters. Write it down. सारे steps नहीं लिख रहे हो, so you are just giving us an illusion of understanding the topic. Find the total area of the shape. How do we find the total area? What shapes do we have? Those squares, 8 square and 9 square. Squares, and the question says so. And what about right angle triangle? Half into base is 9 and height is 12. 81 plus 144 plus, इसको simplify कर लो, 2 1s are 2 6s are 6 9s are 54. ये दोनों ऐड होके we know it will be 225, उसमें 54 ऐड करो. Two more pages left, जल्दी से कर लो, शाबाश. What is the total area, बेटे? (279 centimeters square). Now the next one says expand and simplify. How do we expand this? 2x पहले पूरे bracket से and then +1. Please do not forget to mention this +1. This is very vital. So 2x square plus 8x plus x plus 4. So 2x square plus 9x plus 4. What about this one? LCM x and x plus 2. 3 will multiply by x plus 2 plus 4 will multiply by x. Use appropriate brackets, please. When you have the same denominators, can I write it with a single denominator? साथ लिखूं अलग लिखूं, एक ही बात है. So 3x plus 6 plus 4x. What do you get, बचे? डिनोमिनेटर को आप एक्सपैंड करके भी लिख सकते हैं. यस बचे.
कहाँ नीचे? I have not expanded the denominator. So 3x plus 4x is 7x. Three markers, three girls, three girls plus four girls. Three girls plus four girls. Seven girls. Seven girls square तो नहीं होगी ना? सेवन गर्ल्स स्क्वायर तो नहीं होगी ना? अब गर्ल्स की जगह x लगा लो. 3x plus 4x. Getting it? 3 pens plus 4 pens. 7 pens ही रहेंगे ना? Okay, class. How do we solve this? 10 x पूरा x plus 3 से मल्टीप्लाई होगा. यूज अप्रोप्रिएट ब्रैकेट्स. x यहाँ डिवाइड हो रहा है. If it goes on the other side, it will multiply. Plus 5x middle term breaking, minus 10 is 0. X common, x plus 5 minus 2 common, x plus 5. An entire x plus 5 bracket common. Now either x plus 5 is 0 or x minus 2 is 0. X is negative 5 or x is positive 2. Make sure you're getting these values. Not, then feel free to let me know. कभी अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते. वो लेवल मैथ्स में कभी भी अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते. If it is there, it is there. तो प्लस 10 वहां जाके क्या होगा? 0 है ना? हट क्यों जाएगा? It's an equation. You cannot convert an equation into expression, or not vice versa. You cannot convert an expression into equation. टेक्निकली जब 10 उधर जाता है तो उसके पीछे मैथ्स क्या है? वी आर सबट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम बोथ साइड्स. जब लेफ्ट साइड से 10 सबट्रैक्ट करते हैं तो 10 minus 10 बिकम 0. के बाद आसान है. बाकी दोनों साइमल्टेनियस भी आ जाएगा. डोंट वरी. Some results, students were asked how long they had spent doing homework the day before. Results are summarized. 0.5, 0.5. On the grid, draw frequency polygon to represent this information for the girls and another frequency polygon for the boys. Frequency polygon कहाँ से start होते हैं? 0 से 0.5 है. इसका बिल्कुल मिडिल हम लेते हैं. 0.25 ले. अगर हिस्टोग्राम बनाते तो 0 से 0.5 का बनता. So just explaining you कि 0 से 0.5 का हिस्टोग्राम बनता ऊपर तक. पॉलीगॉन उसके मिडिल से स्टार्ट होता है. So what is the frequency for the first one? गर्ल्स की बात करूं, 0 से 0.5 तक फ्रीक्वेंसी 0, तो उसके बिल्कुल बीच से स्टार्ट होगा. कहाँ जाएगा बिल्कुल बीच से? फिर 0.5 से 1 तक. What is the frequency for girls? 5. So let me just plot these points first. फिर इनका हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना देंगे. So 0.25 पे गर्ल्स के लिए फ्रीक्वेंसी है ही नहीं. And then इस पे the frequency is 5, 1, 2, 3, 4 and 5. Then 1.25 पे it is 8. Five, 6, 7 and 8. Then what about 1 point? Where we have 6.
Then the next value is 0 and then 1. So these are all the points and they would be joined by straight lines. Polygon है बेटे. Do not confuse it with cumulative frequency curve. कर्व बनाना भी नहीं है बेटे. और इसको हम एंड दिस इज फॉर द गर्ल्स. इसी तरह सिमिलर वन कैन बी मेड फॉर द बॉयज. क्लियर है? राइट डाउन द मॉडल ग्रुप फॉर द गर्ल्स. मॉडल ग्रुप का क्या मतलब है? मोस्ट अकरिंग वैल्यू. कौन सा वाला है मोस्ट अकरिंग फॉर द गर्ल्स? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी विच वन इज इट? 1 से लेके 1.5. so the model group is एक ही बात है. मॉडल क्लास मॉडल ग्रुप 1 से लेके 1.5. फिर वो कमेंट है करना है, वो दोनों ग्राफ्स हम देखेंगे तो पता चलेगा. नहीं एक ही बनाया अभी. लास्ट क्वेश्चन. read the question first. In a quadrilateral ABCD, angle A is this, B is this, C is this. Finding sum of angles. What is the sum of angles in a quadrilateral? 360. The sum of angles in a quadrilateral is 360. So 2y plus x plus 3y plus x plus 2y plus 10 plus, write it down, bache, 3x plus 5 is equals to, add all the y's together, 2, 2, 2, 2, 3, 7y plus 5x plus 15 is 360. 7y plus 5x is okay. Angle A की वैल्यू इसने बताया 90 है. So the other equation is simply 2y plus x is 90. Solve the simultaneous equations. We need to solve these two equations. Okay. So पहले let's understand substitution. Substitution में observe इसको subject बनाना सबसे easy है. Which one of them is the easiest? X in the second one, right? X is equals to 90 minus 2y. This is again the second. यही same equation है. So now which one should I plug it in? पहले वाले में plug in करते हैं. 7y plus 5 times 90 minus 2y is 345. Carefully, 7y plus 5 into 90 is 450 minus 10y is 345. So minus 3y is 345 minus 450. So minus 3y is 5 हो गया, minus 105. Y is minus 105 upon minus 3. So what is the value of y? 3 ones are, 3 threes are 9 or 5. 35. So the value of x is 90 minus 2 into 35. 90 minus 70. 7y minus 10y is minus 3y. This is substitution. Always valid method हर दफा चलता है. Always valid method हर दफा चलता है.
ओके क्लास, एलिमिनेशन भी ओके ओके ओके, जरा देख लो। एलिमिनेशन भी दो तरीके से सिखाता हूँ, बाय एलिमिनेटिंग एक्स एंड बाय एलिमिनेटिंग वाई, दोनों सीखते हैं। इफ आई वर टू एलिमिनेट वाई, आई मस्ट मेक श्योर दैट देयर कोएफिशिएंट्स आर सेम। एक का 7y, एक का 2y है। What should I do? I should multiply the first equation by 2 and the second one by 7. So if I multiply it by 2, what will I get? 14y plus, make sure the entire equation is multiplied by 2. 10x is equals to, इसको भी 2 से multiply करेंगे, 690. Now the second one multiplied by 7, 14y, 7x, 9 sevens are 630. Now you decide what do you need to do with these two equations. You either add them or you subtract them. Be logical with the operation that you decide. क्या करें दोनों में से कि y eliminate हो जाए? Subtract. So I should take the first equation and I should subtract the second equation from the first one. Is that right? Subtract करते हैं, 14y में से 14y तो cancel हो गया. 10x minus 7y is 7x is 3x, and 690 minus 630 is 60. 690 x is 60 upon 3, so x is 20. Once you find x, then you plug it in any one, आसान वाले में डाल लो. 2y plus 20 is 90, 2y is 70, y is 35. दूसरा तीसरा मेथड भी देखो. इफ आई वांटेड टू एलिमिनेट x, क्या करना चाहिए था मुझे? Yes class, if I wanted to eliminate x, what did I have to do? पहले वाले में तो 5 है. What should I do with the second one? बना सकते हैं वो भी, बता देता हूँ, डोंट वरी. बट x एलिमिनेट कैसे होगा पहले बताओ मुझे. सेकंड वाले का मल्टीप्लाई बाय 5, 10y plus 5x is equals to 450. And then you subtract both the equations. पहले वाले में से दूसरी वाली माइनस करो. So this becomes minus 3y, 5x cancel हो गया, minus 105, pi is minus 105 upon minus 3, pi is 35. फिर किसी में भी डाल लो, 2 into 35 plus x is 90, x is this clear बच्चों? 7y minus 10y, सही है? So this is what you get. Clear है बेटे?